10th, we are doing today history, chapter number 4, that is history of Indian arts. It should be not India arts, but it's a Indian arts. Here we are going to study about the various forms of arts like visual art, performing arts, and what are the opportunities available to the students in this field. Okay, so we are starting with the chapter number 4, page number 22, and this chapter is quite lengthy and as well as important because you can expect many questions from this chapter, and this chapter has lot of objectives and question answers. So this chapter is overall very important, okay, for objectives as well as for subjective. So very first part is, what is art? It is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom, and also emotions. So basically, art क्या है? It's a skill. Art is basically a skill. It's a human instinct. Instinct मतलब हमारे अंदर जो छुपी हुई जो हमारी कला शक्ति है ना, that is called art. Okay. And this art we perform it, we show it, we express it through the emotions and through our wisdom. Okay, when that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as art. मतलब वट एवर इज़ योर थाट, वट एवर इज़ योर इंस्टिंक्ट, आपकी जो सोच है आप दूसरे के आप परफॉर्म करके वो एक्सप्रेस करते हो, एंड द वे यू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ डांस और इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग और इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग और इन अदर फॉर्म दैट वे, मतलब जो मीडियम है जिससे आपने अपने इंस्टिंक्ट को ब्यूटीफुल क्रिएशन किया है, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट. So the artist's power of imagination, sensibility, state of emotion and his skills are the crucial factors at the root of artistic creation. See, ये जो skills होती है artistic skills, that is not available with everyone, right? Very few people or very limited people having this kind of abilities. Okay, उनके पास एक अलग ही creativity होती है, imagination power is very much strong and very different. They are very sensible, their state of emotions, their skills, they all play a very crucial factor. Crucial means very important role it plays to make the artistic creation. So there are two types of art form actually. The one is visual art and the other one is performing arts. So we will see what comes under the visual art and what comes under the performing arts. So very first, artistic creations are of two types, visual arts and performing arts. The Sanskrit term of the first type is Drik Kala and for the second type is called Lalit और आंगिक कला. यानी कि जो विजुअल आर्ट है ना उसको संस्कृत में कहते हैं दृक कला, ओके, और जो परफॉर्मिंग आर्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज ललित और आंगिक कला कहते हैं, संस्कृत में उसका ये टर्म है. Many examples of the prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world, right? So we people, like जब से humans are established in this world, humans are a form of creation. मतलब वो उन्होंने कुछ ना कुछ create किया है, जैसे कि we can see the form of art on the rock paintings, करेक्ट. तो हमने बहुत जगह पे रॉक को देखा है कि वो अच्छे से कार्व्ड किए गए हैं, अच्छे से पेंट किए गए हैं, अच्छे से कलर किए गए हैं. सो हु डिड दिस? ऑब्वियसली द प्री हिस्टोरिक मैन, means he was also very well aware about the arts. Then it proves that the origin of visual art is as old as stone age men. मतलब जो visual art है, visual art, अच्छा हम बात करते हैं visual art में क्या आता है. तो visual art यानी कि दृक कला, इसमें क्या आता है, पेंटिंग आता है, ओके, पेंटिंग, और यू कैन मतलब जो आप एक्सप्रेस करते हो, स्कल्पचरिंग करना, ओके, पेंटिंग करना, या फिर आर्किटेक्चरल स्किल्स, इंजीनियरिंग थिंग्स, all that comes under the drik kala or visual art. Okay, and then what comes in the performing arts? Performing arts में जो आप perform करते हो, स्टेज पे करते हो, it can be a theater, it can be a dance form, it can be singing, yeah, these all comes under the performing arts. So now folk arts and classical arts की बात करते हैं. तो there are two distinct traditions of the art, that is folk art and the classical art. Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. Folk art is basically is kind of a such art which is carried out and which is practiced by the folk of people, मतलब by the masses of people. उन्हें ये practice करती आए बहुत सालों से. जैसे कि अगर हम कह देते हैं folk art में example like भांगड़ा, गरबा, okay, these kind of dance forms जो I mean masses of people are doing it and that not required a specific ट्रेनिंग, ऑलराइट. बट क्लासिकल आर्ट ऐसा होता है जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. कि क्लासिकल म्यूज़िक ले लो, क्लासिकल डांस फॉर्म ले लो, यू नीड टू गो अंडर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ट्रेनिंग. सो the expression of folk art is a natural part of the people's way of living. Hence its expression is spontaneous. Spontaneous means immediate it comes. मतलब it whatever is in your like आपको जो मूव करना है, आपको जो जिस तरह से परफॉर्म करना है, यू कैन डू इट. देयर इज़ नो कंपल्शन का आपको ऐसे ही शो करना है. अगर भाई एक बंदे ने स्टेप्स अलग किए हैं तो आपको वही स्टेप्स फॉलो करने, वैसा नहीं है. यू कैन डू योर ओन.
So folk art is created by collective participation of the members of the social group. You please underline that line. The folk art is created by a collective participation of the members of a social group. They're like one group of people, they perform a folk art, and that art has been practiced since many years or since many centuries. Like I said, Garba and Bhangra, right? So classical art on the other hand is expressed within a established frame of a consistent rules. Yeah, classical art need a particular rules. मतलब you cannot do your own steps. Whatever is जो classical जो भी perform कर रहे हैं, अगर जो first row के members ने जैसा जैसे उन्होंने steps बिठाए हैं, जैसे उनको करना है, मतलब वैसे ही करना पड़ेगा. Particularly you have to follow some rules in the terms of expressions, in the terms of movement of the hands, legs, everything should be go in hand to hand. मतलब proper unique होना चाहिए. It needs a prolonged training. Prolonged means particular period of training, very long period of time to master any form of classical art. Okay, जैसे आपको गरबा के लिए, हाँ, many people nowadays go and join गरबा classes, but actually it is not needed to join. I mean, you can develop your own style of गरबा. But अगर आपको भरतनाट्यम सीखना है या आपको कथकली सीखना है, तो you can't just try on your own. You have to go under a particular period of training, right? So now, style in art. Artists tend to have their own method of working. You have to understand that every artist is different, and every artist show the uniqueness of their art form in the different forms, of course. So every art have their own creation, they have their own imagination, their method of working is very different from every artist to artist. So it is known as style of the artist. तो हर एक आर्टिस्ट की जो अपनी खुद की स्टाइल होती है, उनकी जो मेथड होती है काम करने की, बहुत डिफरेंट होती है, वेरी यूनिक होती है. So when a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. तो वो ट्रेडिशन बन जाता है. मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट है, उसने कोई नया डेवलप किया है स्टाइल, एंड वही स्टाइल इज़ फॉलोड बाय मेनी ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम, देन दैट स्टाइल ऑफ आर्ट बिकम्स अ ट्रेडिशन, एंड सच ट्रेडिशन गेट्स एस्टैब्लिश्ड एज अ आर्ट स्टाइल. तो उसको हम आर्ट स्टाइल कहेंगे. तो आर्ट स्टाइल इज़ बेसिकली वॉट? इट्स अ स्टाइल ऑफ एन आर्टिस्ट which was developed many years ago, and then after many artists have followed that art. So various art style develop in every culture, which are characteristics of a certain period and a region, and such style are helpful in studying the art history. So this entire chapter is about the art. So we are going to study a lot of things about the art style from the different regions. Like we know the Western style is very different than our regional style, correct? Now we'll talk about the visual art, that is a Drik Kala. So the art of painting and sculpturing are visual art. आप अंडरलाइन कर लो व्हाट कम्स इन द विजुअल आर्ट. द पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग. स्कल्पिंग मतलब कुछ भी मॉन्यूमेंट्स बनाना, आइडॉल्स बनाना, दैट ऑल कम्स अंडर द दृक कला. Okay, before we move to the next page, we will first of all do this Maratha style of painting, and it's a part of your answer. ये आपको पूरा ये जो green box आपके सामने दिख रहा है, you have to learn that by heart. Maratha style of painting. मतलब this Maratha style of painting means कोई मराठा का जो artist होगा, उन्होंने ये Maratha style बहुत पहले develop की थी, and then after many artists from Maratha as well as from other region have followed the same style, so it become a tradition. Okay, so Maratha paintings is an example of art style. The style known as Maratha paintings began to develop in the latter half of the 17th century. Here the spelling of letter is different. It should be LATER. Double T नहीं होना चाहिए, single T होना चाहिए. You do correction. 17th century C. तो ये स्टाइल कब डेवलप हुई थी? इन द 17th century C. 17th century मतलब बहुत आज से लगभग 300 साल पहले. This style consists of colored paintings, and they occur as a murals and also miniatures used in the manuscripts. Murals and miniatures are basically a small जो frilling work होता है. अभी I am not in front of you, so I cannot show you. But murals and this kind of miniatures you can find it on the palace के जो pillars होते हैं, इसमें छोटे छोटे डिज़ाइनिंग्स जो किए होते हैं ना, that is actually called murals and miniatures. Okay. और वो नॉर्मली ये सब जो डिज़ाइनिंग होती है, छोटी छोटी डिज़ाइंस होती है ना, दैट यू कैन फाइंड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स द हैंड रिटन बुक. ओके, मुराल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वाडाज. वाडाज यानी कि उनके जो वाड़ा रहते थे ना, जो पैलेस रहते थे उनके बाहर का जो ओपन प्लेस था, दैट लाइक वाई, मिनावली एंड सतारा. तो इवन इन टूडेज डे ऑल्सो द वाई जो वाड़ा है या फिर सतारा का जो वाड़ा है, वहाँ पे यू विल फाइंड आउट द मराठा स्टाइल ऑफ painting. The like pillars and the walls are painted with the murals and miniatures. Miniature means small छोटी paintings. Okay. The Maratha style was influenced by Rajput and European style of painting. Means it's a mixture. Maratha style is basically a mixture of two different style को combine कर दिया गया है, Rajput style and European style को, because in the 17th century European had already entered
So Maratha had a contact with the Europeans, and they have learnt this style of painting from Europeans as well as Rajput. Painting's style help us in understanding various things about the times in which it was developed, such as the lifestyle, attires, customs, etc. So painting से हम क्या क्या जान सकते थे? We can come to know about their lifestyle, like what kind of lifestyle they used to have, कैसे rich थे, poor थे, किस तरह से रहते थे. We can know that. Then we will talk about their attires, means what costumes, what clothes they used to wear, and customs, their traditions, their rituals, what they used to follow. Alright, so we were talking about visual art. So we'll now talk about the visual art. There are two types of visual art ka, it can be in the form of painting or it can be in the form of sculpting. So art of painting we will talk about first. Paintings are two dimensional, 2D. Okay, paintings are the 2D कहते हैं, मतलब पेपर के अंदर you can do a painting. हाँ, अभी तो 3D भी paintings होती है, मतलब कि people do a painting on the, not just on the paper, even they do it on the wall, even they do it on the sand. हमने बहुत अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स देखी है, राइट. इवन इन द वाटर ऑल्सो सम आर्टिस्ट आर सच एन एक्सीलेंट, दे परफॉर्म देयर आर्ट फॉर्म इन वाटर एज वेल. So anyways, we'll talk about the 2D part. For example, sketches or paintings of the nature, objects and individuals. They are done on various surfaces such as rocks, walls, papers, canvas. Canvas is basically a paper. For different types of earthen pots. Okay, earthen pots के ऊपर भी paintings की जाती है. Yes. The murals of Bodhisattva, you can see the, no it's not given to you, okay, Bodhisattva at Ajanta caves. तो मुराल जो Bodhisattva, Ajanta caves में अगर आप जाओगे, when you will visit it, you will find out the pillars there, and pillars के वहाँ पे mural paintings draw की है Bodhisattva की, यानी कि बुद्ध की. Is one of the finest example of the art of painting which was done so many years before and is still preserved. Now, folk style of paintings. Rock paintings dating to Stone Age have been discovered in many countries. In India, there are rock painting sites in the site of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. So these are the states where you will find out the rock paintings since Stone Age. The rock paintings in the caves at Bhimbetka are famous. Bhimbetka is a World Heritage Site which we have already studied in the chapter number 3. If you remember, I told you to remember all that World Heritage places. Now, rock painting usually depict means it shows, it expresses what? Human, animal and geometric figures like triangles, squares and all. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from Stone Age to the beginning of agriculture. So starting में rock painting में वो लोग क्या दिखाते थे? What they used to depict? They used to show the humans or animals or geometrical figures. But now we can see there is a lot of changes. Now you can show a lot of things through the paintings. आप क्या कुछ नहीं draw कर सकते? In fact, you can draw everything. You can show your all the imaginations, your views, your thoughts through the help of painting. So there is a lot of changes we have seen across the time. The change is visible in the depiction of flora and fauna. Flora and fauna means like color, vegetations and animals, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in the colors that were used. Earlier there were very limited colors, but now we have all the types of colors. Earlier what colors they used to use? The black color, red color and white colors were used in the rock paintings, which were made from the natural substances. Yeah, black जो color होता था that was erected from the coal. रेड होता था जो हम नॉर्मली मतलब जो सीमेंट होती है ना, मतलब जो ब्रिक्स होते हैं उसको उससे ये रेड कलर जनरेट किया जाता था. तो वाइट कलर वाज जनरेटेड फ्रॉम द सी के वहाँ जो सैंड होती है वहाँ से, एशेस से. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. The tradition of folk style of paintings closely resembles the style of rock paintings. Customs such as decorating the house walls and courtyards, that is रंगावली. ओके, अभी भी हम जो यूज़ मैनी पीपल हम देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू बहुत ही घर पे, इनफैक्ट आपके भी घर के कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब कि जो डोर का जो मेन आंगन रहेगा वहाँ पे बहुत अभी भी मम्मियाँ ड्रॉ करती है रंगावली. रोज़ की एक ट्रेडिशन है. और स्पेशली जो हमारे ऑस्पिसेस डे होते हैं, मतलब जो दिवाली के दिन होते हैं या फिर फेस्टिवल डेज होते हैं, तो इन साइड में तो डेफिनेटली रंगावली यानी कि रंगोली ड्रॉ की ही जाती है, राइट. तो ये भी एक आर्ट फॉर्म ही है. इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल. सो ड्राइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बल्स, जैसे स्वस्तिक ड्रॉ कर लिया, ओम ड्रॉ कर लिया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग. और यूजिंग द पैनल्स ऑफ द पेंटिंग्स टू नरेट द स्टोरीज हेल्प टू डेवलप द रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स. ओके, यू कैन सी दिस, यू कैन रीड दिस. डू यू नो इट्स अबाउट द वारली पेंटिंग. अब आप में से बहुत लोगों ने ये इस टाइप ऑफ पेंटिंग सीखा होगा.
ऑब्वियसली इन योर व्हेन यू आर गोइंग फॉर सर, मतलब कि आप जब कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आई मीन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहती है ड्राइंग की, इसमें ये इस टाइप की पेंटिंग्स को दिखाया जाता है डेफिनेटली. सो ये जो एक वाली पेंटिंग है, जो एक एकदम प्लेन पेपर या प्लेन जो रेड कलर का क्लोथ या फिर रेड कलर की जो सरफेस होती है पेपर के ऊपर, इस तरह से वाइट कलर से पेंट किया जाता है, राइट. सो द ट्रेडिशन ऑफ वाली पेंटिंग इन पिंगुल और चित्रकाठी इन महाराष्ट्र वर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. सो वाली पेंटिंग इज बेसिकली originated in Maratha style of painting only, and one more painting is चित्रकाठी that you will study in the next paragraph पे ही है चित्रकाठी क्या है. तो अभी के लिए विल टॉक अबाउट वारली पेंटिंग. Okay, Jivya Somia Mahashe, the artist in Thane district, has played a very great role in making the Wali style of painting a popular. So you can remember his name. He has been honored with the number of national and international awards for his paintings. In the year 2011, he was awarded with the Padma Shri award. So now next talk about the चित्रकाठी. You have answer also in चित्रकाठी, तो ये पैराग्राफ आपको करना है प्रिपेयर, ठीक है. The tradition of चित्रकाठी is mentioned in Manasola's a book written by Chalukya king Someshwara in the 12th century CE. तो ये जो आर्ट फॉर्म है चित्रकाठी, आप you can see the picture also how it looks. That was been originated in the 12th century in the period of Chalukya king. In the Chalukya kingdom से ये originated है. It confirms the antiquity of the tradition. Antiquity means uniqueness. The tradition of narrating stories from Ramayana or Mahabharata with the help of wooden puppets and painting is known as चित्रकाठी और पिंगुली ट्रेडिशन. तो बेसिकली क्या होता है, ये पपेट्स होते हैं जो हम नॉर्मली पपेट्स देखते हैं ना. राजस्थान का भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है. दे पुट अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पपेट्स. सो वो हाथों से पपेट्स को ऊपर नीचे करते हैं और पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं. मतलब जो पूरी स्टोरी होती है, लाइक महाभारत या रामायण की जो स्टोरी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि राम एंड सीता दे गॉट मैरिड, तो देर इज़ अ वन पेंटिंग ऑफ राम एंड सीता. द नेक्स्ट पेंटिंग इज टॉकिंग अबाउट कि दे हैव गॉन टू वनवास. देन थर्ड पेंटिंग विल टॉक अबाउट दे हैव कम बैक फ्रॉम वनवास. इस तरह से ये जो पूरी जो स्टोरी होती है ना, दैट इज़ नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स. अंडरस्टूड. सो दैट इज़ कॉल्ड चित्रकाठी से काठी मीन्स पपेट एंड चित्र मीन्स पेंटिंग. तो जो पेंटिंग्स पपेट्स को ड्रॉ करके जो की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड चित्रकाठी. अंडरस्टैंडिंग नाउ. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिंगुली ट्रेडिशन. वाई? बिकॉज दिस वॉज प्रैक्टिस बाई द पीपल इन पिंगुल, यानी जो लोग पिंगुल करके एक विलेज था इन महाराष्ट्र, यहाँ से इस पेंटिंग की शुरुआत हुई है. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिंगुली आर्ट फॉर्म. They belong to the Thakur tribal community. It is located in the Konkan region near Kudal. Okay, यानी एकदम नीचे साउथ में है, कोंकण रीजन में ही है. The चित्रकाठी pictures are drawn on a paper and painted in colors made from natural substances. And it takes 30 to 50 pictures to complete the narration of a single story. So एक ही पिक्चर में you cannot get the entire story. तो एंटायर स्टोरी, जैसे हमने कहा कि रामायण आया महाभारत है, ये जो पूरी स्टोरी है उसको डेपिक्ट करने के लिए, उसको नरेट करने के लिए दे रिक्वायर 30 to 50 पिक्चर्स और इमेजेस. So these pictures are preserved very carefully and handed down from one generation to another because it's our heritage. The artist and the government are trying to preserve the tradition which is on the verge of extinction nowadays. Extinction means it's now going to get over, finished. People are very less aware about this style of painting. So this was all about the visual art form. Okay. So next part is classical style of painting. More about the painting part only. The ancient Indian texts have explained various aspects of art in the great details. There are altogether 64 arts mentioned in these texts. तो हमारी जो पुराना है या जो हमारे जो वेद उपन्यास, उस समय लिखा है कि कितनी टोटल हाउ मेनी आर्ट फॉर्म्स है. 64 आर्ट फॉर्म्स है. ओके. तो और पहले के ज़माने में मतलब कहा जाता था कि एवरी पर्सन शुड नो दिस 64 आर्ट फॉर्म्स. द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मैंशनड एज अलेख्यम और अलेख्य वैद्या इन दीज. मतलब पेंटिंग को क्या कहा जाता था? अलेख्य और या अलेख्यम कहा जाता था. एंड इट इज़ सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स, दैट इज सदांगी. The ancient Indian scholars studied these 6 aspects very minutely and they include Rupa Bheda, यानी कि different shapes and forms, Pramana, that is proportionate depictions of the various features of an image. Proportional, then you have so Rupa Bheda means different color forms, okay, different shapes and forms, color forms.
प्रमाणा मतलब कि प्रॉपर प्रोपोर्शनेट, मतलब कि अगर इफ़ यू आर डिपिक्टिंग, इफ़ आप जब कोई स्केचेस ड्रॉ कर रहे हो, कोई सी ह्यूमन का स्केच ड्रॉ कर रहे हो, देन जो डिफरेंस आपके दो आँख के बीच का जितना डिफरेंस होता है उतना ही डिफरेंस आपके फ़ोटो में भी, आपकी इमेज में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए, तो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए इन शॉर्ट. ओके. देन भावा, दैट इज़ एक्सप्रेशन. देन यू हैव अ लावण्य योजना, दैट इज़ एस्थेटिक्स, यानी कि लावण्य योजना मतलब कि यू हैव टू शो द फिगर वेरी प्रॉपरली, जैसा रियल फिगर है वैसे ही आपको दिखाना है. देन है सुदृश्यता, यानी कि रिसेम्बलेंस टू द रियलिटी, दैट पिक्चर शुड लुक वेरी नियर, नेक्स्ट टू रियल दिखना चाहिए. देन यू हैव वर्णिका भंग, यानी कि कलर कंपोजिशन, वेरी कलर कंपोज, सेम कॉम्प्लेक्शन कलर्स होने चाहिए. Okay, so whoever is a painter, he has to look after these 6 things very properly and minutely, you have to study about. नेक्स्ट यू हैव आगमा, टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजन सेक्ट्स. आगमा ये एक होली बुक है जैन की, एंड पुराणाज, वास्तुशास्त्री, ये सब हमारी होली बुक्स है हिंदू रिलीजन की. ठीक है. एंड दीज ऑल बुक्स एक्सप्लेन व्हाट द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. या दिस आगमा, पुराणा, वास्तुशास्त्र, या ये जो हमारे होली बुक्स है, सेक्रेट बुक्स है ना, दे ऑल टॉक अबाउट, यू सी एनी टेम्पल्स, आप कोई भी जैन टेम्पल विजिट करो, हिंदू के टेम्पल विजिट करो, इवन साउथ के भी जो टेम्पल्स होते हैं वो विजिट करो, देर आर डिफरेंट, आई मीन आप वहाँ पे टेम्पल पे जाओगे आपको अलग टाइप का ही एक आर्ट फॉर्म दिखाई देगा. हर एक वॉल पर, हर एक पिक्चर, हर एक वॉल पर, हर एक पिलर पर, हर एक सीलिंग पर, फ्लोरिंग, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली ब्यूटिफुली पेंटेड. यू प्लीज़ विजिट सच अ टेम्पल एंड सी द लुक ऑफ द पेंटिंग पार्ट. सिर्फ भगवान को देखने मत जाओ, उसके आजू बाजू का जो नेचर है वो भी देखना ज़रा. ठीक है. अभी नहीं, जब लॉकडाउन खुलेगा तब. नेक्स्ट यू हैव मिनिएचर पेंटिंग्स इन द मैन्युस्क्रिप्ट. मिनिएचर मीन्स स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स, छोटे छोटे पेंटिंग्स. ठीक है. द miniature paintings in the early manuscript show an influence of the Persian style. ये पर्शियन स्टाइल से लिया गया. पर्शियन मीन्स उर्दू, जो इस्लामिक स्टाइल ना, दैट. The Deccan miniature style was developed under the patronage of the Deccan Sultanates. During the reign of Akbar, the Mughal emperor, the Mughal miniature style, showing a blend means mixture of Indian and Persian style, was developed, because we all know Akbar was the greatest renowned Mughal emperor, but he had accepted Hindu religion also very wholeheartedly. So in his time there was a form of paintings which was a mixture of both Indian as well as Persian. Okay. So now this was about Indian part. Now we will talk about Western style of painting, which was derived from Britishers. In the British period, Indian artists came under the influence of the European style of painting. An art school was established under the leadership of James Wells, a Scottish artist, in the times of Savai Madhavrao Peshwe from Shaniwarwada in Pune. He had done a portrait of Savai Madhavrao and Nana Fadnavis. Gangaram Tambat, a Marathi artist who worked with the Wales. Wales is a James Wells, and deserved a special mention here. You can see the painting. This painting was made by James Well in his school. The name of the school was it's written here, जो पुणे में establish की गई थी, in शनिवारवाड़ा. Okay. Scottish artist he was. And there is one more, Nana Fadnavis, Gangaram Tambat with his guru. This is a painting which looks so real, right? See the color composition, see the expression, see the color, costumes, attire, everything is so minutely drawn. Yeah, he had made drawings of the rock cut caves at Verul and Karli. बहुत important है for FIB, for even Madhya column. This is, remember it very by heart. James Wells ने क्या किया, create किया है, rock cut caves बनाए हैं, which is at Varul, and ये जो है that is also one of the World Heritage Site. And some of his drawings are preserved in the Yale Center of British Art of Yale University in England. Okay. The exact portrayal of the object of the painting is characteristics of the European style. A number of renowned artists were trained in the JJ School of Art, which is again a very famous school even in today's time. JJ School of Art, which is at a fort, okay, near VT station. So that is the biggest industry, which was established in 1857, offering courses in the European style of painting. Pastonji Bomanji, an alumni means he was an ex-student of JJ School of Art, and he himself was the greatest artist. उनका काम क्या था, तो he was the person who created a replicas of Ajanta paintings. उन्होंने replica मतलब duplicate paintings draw की थी अजंता की, जो अजंता caves की है ना, same as it is, हूबहू.
sculptural art. Okay, so we have talked about the painting, now we will talk about the sculptural art. Sculptural art भी हमारे इंडिया में तो काफ़ी टाइम से फेमस है. बहुत सारे monuments क्रिएट किए गए हैं, गॉड्स एंड ऑल दैट, स्टैचूज़. Sculptures are three-dimensional, such as images, statues, pots, objects with the artistic embellishment. Embellishment means creation. For creating sculptures, either rock or a metal or a clay is used. You underline this. स्कल्पचर्स बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. मेटल, कोई भी मेटल चाहिए, या तो फिर कोई क्ले चाहिए, या तो यू नीड अ रॉक. ओके, रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कार्विंग. रॉक स्कल्पचर को कार्विंग करके उसको शेप देना पड़ता है, जबकि मेटल स्कल्पचर को क्या करना पड़ता है, यू हैव टू मोल्ड देम. मोल्ड मतलब आपको प्रॉपर शेप में लाना होगा उसको मेल्ट करके. एंड क्ले स्कल्पचर्स जो हम नॉर्मली जो हमारे फेस्टिवल्स में जो गणेश आके जो आइडल्स बनाते हैं मिट्टी से, दैट इज़ द क्ले स्कल्पचर्स. ओके, दे आर फॉर्म डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हैंड्स using the molds. The entire temple of Kailasa, this is very 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 important students, you mark it important. The entire temple, Kailasa temple, which is at Verul, it is a unique monolithic sculpture. Monolithic मतलब ये mono यानी single. Okay, lithic means stone, rock. यानी कैलाशा टेम्पल जो इतना बड़ा टेम्पल है, वो पूरा एक टेम्पल एक रॉक में से बनाया गया. यू जस्ट इमेजिन हाउ बिग द रॉक कुड बी. एंड जब वो जो ये जो स्कल्पचर्स जो थे, या जो आई मीन जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये पूरे एक रॉक को कार्व करके टेम्पल का शेप दिया. इवन एवरीथिंग वहाँ पे जो भी कुछ है, पिलर्स एंड एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द वन सिंगल रॉक. द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर, ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, इसको करेक्शन कर लेना. अशोका ASH, अशोका स्तंभ जिसे कहते हैं. and that is also which is at Sarnath and is our national emblem. We be this is also one of the example of sculpture art. Now we'll talk about the folk style of sculptural art. Okay, folk style मतलब जो masses of people, what kind of sculpture art they perform. The sculptural art is also an ancient as the part of painting, dating back to the stone ages. मतलब stone age से ही शुरुआत हो गई है sculpture art की. stone age में भी लोग है ना ऐसे clay के toys बनाते थे, फिर ये गॉड गॉडेसेस बनाते थे. सो दिस काइंड ऑफ पेंटिंग वाज डन. आई मीन स्कल्पचर जो ये आर्ट फॉर्म है वो भी सदियों से लोग करते आ रहे हैं. ठीक है, कार्विंग टूल्स आउट ऑफ द स्टोन कैन सेट टू बी द बिगिनिंग ऑफ स्कल्पचर आर्ट. येस, जो स्टोन के जो वेपन्स थे, एक्स एंड ऑल अदर वेपन्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. The custom of making clay images for rituals has been prevalent in India since Harappan times. It has continued even till today in many regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Rajasthan. Right? हम अभी भी idols बनाते, even Ganesha idols, mask of Gauri, bull figurines. All these are the part of folk style of sculpture art. Then figurines means figures. Festival of Belpoda, wooden memorials, Veer Galas. These all decorated clay storage bins, etc. are example of folk traditions of sculptural art. Means many people are also involved in making the sculptural art at every household. Next comes to classical style of sculptural art. Now classical style, see folk style मतलब ये जो लोग यहाँ पे लोगों को कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. they do it on their own. मतलब खुद के पर्पज़ के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए they create it. Now classical style में you will see that there are the people who are going for a specific training and then they are creating the sculptures. Okay, where you have to get a very perfect shape of the sculpture. So Harappan seal stones and bronze statues tell us about the 5,000 years old or even older traditions of the Indian traditions of sculpture art. See, Harappan style is very very vast and very very like rich heritage, जो अभी भी हमने उसको पूरी तरह से जाना नहीं है. जो 5,000 years पहले ये स्टाइल ये हड़प्पन सिविलाइजेशन सेट हुआ था, तो उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है. सो इवन दिस पीपल था 5,000 years पहले के लोग भी इस स्कल्पचर आर्ट से काफ़ी दे वर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर अबाउट इट. So it is said that the tradition of carving out stone sculptures of a larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillar. So सबसे पहले अशोका पिलर, जो बहुत बड़ा अशोका पिलर है, okay, सबसे सांची स्तूपा, all these are done in the period of Ashoka, that was carved from the stone, from the rock. However, beautiful sculptural establishment of the stupa are supposed to be later additions. Stupa is also like a temple. आप देख सकते हो, you have can see this बोरदबुरा जो आपके सामने है ना, बोरदबुदुर, ये this is a kind of a stupa. Okay, you will find them in many places of India.
Okay, and okay, the sculptures at Bharut are testimonies. Testimonies means example of the continuous established development of the sculptural art in India. Buddhism was spread far and wide. As we know, अशोका ने अपने बेटी और बेटे को भेजा था to spread the Buddhism in different countries outside the country India. So even when they went to the different countries, they have spreaded the Buddhism के साथ साथ वो रिलीजन के साथ साथ they have also spreaded this art form, sculptural art form. So erecting Buddhist stupas began in those countries as well. The stupa at Bharatpur in Indonesia is the largest stupa in the world, and it was built in the period of 8th to 9th century के बीच में, in the period of Ashoka के टाइम में ये बिल्ड किया था. और आज मतलब इतने टाइम के बाद ओके दिस stupa is now come under the वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये एक पार्ट है विच ओके इंडोनेशिया में है, विच इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन साउथ. Indian iconography. So this is what we are going to talk about, the Indian study of Indian iconography. Iconography means studying of temples, studying of all the sculptures, उसकी study करना, that is called iconography. The Gandhara School of Art, ये तो बहुत famous school of art है, इंडिया में located है. Begin मतलब पहले इंडिया में था of course, जब भी सेटअप था it was a whole in India, but now it is not in India, it is in Pakistan now, Afghanistan. Gandhara School of Art came into the being in the 2nd century BC in Afghanistan and neighboring regions, and it had a Greek and Persian influence. तो ये जो Gandhara School of Art था वहाँ पे it was a part of India earlier, but now it is in Afghanistan. And here this school was teaching both the blended style, that is Greek and Persian. See, Greek style is also very rich and very heritage. The 1st to 3rd century CE, that is the Kushana period, saw the rise of Mathura School of Art. Mathura school laid the foundation of Indian iconography in India. Iconography, underline this, what is iconography? Iconography is basically, it's a style, it's a branch of a knowledge which includes everything. What about everything about the images of God and goddesses? So iconography is basically what study of temples and gods and goddesses, उनकी मूर्तियों, जो मूर्ति कला है, मूर्ति के बारे में स्टडी करना. अभी सी गॉड्स एंड गॉडेसेस को हम ऐसे ही क्रिएट नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर शेप, प्रॉपर जैसे मतलब सी वी हैव नेवर सीन गॉड और गॉडेसेस, हमने सिर्फ उनको मूर्तियाँ फिर उनको फ़ोटोज़ में ही देखे, राइट. तो एक्चुअल उनको एकदम लाइव दिखाना वो भी एक बड़ा टास्क होता है, बड़ा एक चैलेंज होता है फॉर द आर्टिस्ट. So the Kushana king made use of images of various deities. Deities means god, goddesses on their coins. Yeah, Kushana ने बहुत सारे coins mint करवाए थे, बनाए थे, जहाँ पे उन्होंने coin में they have depicted the pictures of god and goddesses. During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards for sculpture art were set. The art of making bronze images was developed under the patronage of Chola king. Patronage means under the period of Chola king, that is from 9th to 13th century. So we can see that all the Indian rulers, जितने Indian rulers हुए थे, they were the patronage of, they were the followers of sculptural art, and they had they have given permission to the sculptural art form, and they have also given permission to create deities and god and goddesses in the form of idols, or in the form of pictures minted on the coins, or somehow, okay, or in the form of stupas. So bronze idols of gods and goddesses like Shiva, Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu, etc. were made in this period. और आज भी बहुत के घर पे ये सब मूर्तियाँ होती है जो ब्रॉन्ज़ की बनी है, या तो कॉपर की बनी है, या तो स्टील की भी बनी होती है, राइट. अर्लियर द ब्रॉन्ज इज़ द वेरी फाइनेस्ट एंड द फर्स्ट मेटल. लेटर ऑन दिस अलॉय फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज डिस्कवर किया गया है. Okay, the next one is architecture and sculpture. Now, how they are related to each other? Architecture and sculpture is very related to each other. तो there are number of rock cut caves in India. Rock cut मतलब rock को cut करके जो caves बनाई गई है वैसी, जैसे कि अजंता, okay, एलोरा, एलिफेंटा, these all are rock cut caves. They are originated in India in 3rd century BCE. Technically, the entire composition of a rock cut cave represent a union of a architecture and a sculptural art. So basically जो rock cut है, that is it is a combination of two art forms. So one is architecture and the other one is sculpture. Architecture क्यों? Because there are so many how can I explain you now, but there are so many temples, or there are so many places architecturally इतने अच्छे से excellently बनाई गई है कि मतलब अगर कोई मूर्ति या कोई मूर्ति अगर सेंटर ऑफ द टेम्पल है तो आप उसको कहीं से भी देखो, फ्रॉम वट एवर एंगल यू, इफ यू लुक एट दैट मूर्ति ना, यू विल सी दैट मूर्ति इज़ लुकिंग एट यू.
और ऐसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स भी है कि मतलब उनके जितने दरवाजे हैं ना वो एक ही एक लाइन में बैठते हैं, मतलब एक ही लाइन में वो सारे दरवाजे दिखते हैं. सो अभी मैं आपको दिखा नहीं, आई मीन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस यू, बट देर आर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स कि दे लुक all similar from whichever angle you look at them. So yeah, it's a part of the architectural skill. Okay, so okay, so here I am. Rock cut caves represent a union of architecture and sculpture. Its entrances and interiors with it carved columns means pillars, and images are excellent specimen of a sculptural art. The paintings on the walls and the ceiling have survived in some of the caves even till today. The rock cut caves at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as World Heritage Site in the year 1983. See, you can मतलब आप अगर इस अजंता केव के अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि जो उसके जो पिलर्स है दे ऑल आर ऑफ सेम शेप, दे ऑल आर ऑफ लाइक सेम साइज, उनका 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, इतना सेम, इतनी सिमिलैरिटीज़, इतना एक्सलेंट वर्क दे डू इट लॉन्ग बैक. ओके, so now coming to page number 26 का second part. The temple architecture in India began to develop in the 4th century CE during the Gupta period. The temples built at the beginning of the Gupta period had only the sanctum sanctorum, that is गर्भगृह. गर्भगृह मतलब पहले घर पे ही, या फिर लोग ये जो इस तरह के टेम्पल्स जो अपने घर के दरवाजे के वहाँ पे या फिर अपने जो आंगन होता है ना वहाँ पे बनाते थे. लेटर ऑन बिकम अ ट्रेडिशन टू हैव अ बिग टेम्पल्स ऑन द रोड साइड, ओके, सो दैट एवरी पीपल कैन विजिट इट. अर्लियर दे यूज टू मेक इट जस्ट नेक्स्ट टू देयर डोर्स of the house, or they used to make it in the veranda with the 4 columns. तो गर्भगृह means घर के अंदर. But later on the temple architecture in India had reached its peak by 8th century. Peak मतलब बहुत famous हो गए. Like the kings जो उस time के थे ना in the 8th century, whoever were the king, they were in a competition to create the temples. उन्हें बहुत सारे, they spent lakhs of rupees to create a temple. Century C, this is easily testified by the magnificent composition of the Kailash temple of the Verul. Just like I said, Kailash temple जो इतना बड़ा temple है वेरुल में, which is created from a one rock. It's a one rock cut. By the medieval period, various styles of temple architecture had developed in India. So in India, we have a different type of temples architecture. If you will go to Western, you will find that churches. जितने हमारे यहाँ पर temples के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, वैसे वहाँ पे churches के ऊपर खर्च हुए. मतलब उनके भी style of, we can show our regional style, our Indian style in the form of temple architecture के through. They used to show it through their church architecture. Okay, and many tourists visit this. The style of temple architecture are identified by the style of tower, that is शिखरा, because हमारे जितने भी इंडियन टेम्पल्स होते हैं ना, दे हैव अ शिखर मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं. ओके, लाइक अ टावर, शिखर यानी कि लाइक माउंटेन जैसे होता है, बेस बड़ा होता है, देन एज इट गो अप एंड अप, इट गोज हाई एंड हाई, इट बिकम अ पीक, मतलब एक छोटे छोटे बनते जाते हैं, राइट, एक एपेक्स जैसे ट्राइंगल शेप होता है ना वैसे. द नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ओके, नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो वहाँ पे नागर स्टाइल ऑफ होते हैं, जैसे आप यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ इज़ द नागर स्टाइल. ये जो आपके सामने ये पिक्चर दिख रहा होगा, दिस इज़ अ नागर फॉर्म ऑफ स्टाइल. यू कैन सी दिस हाउ क्लोजली, आप देखो उसको बारीकाई से देखो किस तरह से दिख रहे हैं. या नॉर्मली यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ टेम्पल इन द नॉर्थ, मतलब जब हरिद्वार जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, उत्तर प्रदेश में जाते हो, काशी जाओगे, ये जो पिलग्रिम प्लेसेस पे अगर आप जाओगे या फिर आप टीवी में देखोगे उसके पिक्चर्स, इट विल लुक लाइक दिस, शिखरा बंद होते हैं. ठीक है, देन वी हैव द्रविड़ा स्टाइल. द्रविड़ा स्टाइल यू विल फाइंड इन द साउथ, और ये नीचे आपको जो दी है वो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर. यू कैन सी दिस सो ब्यूटीफुली डन, इतना बारीकाई काम, इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ, सेम स्पेसिमेन. आई मीन कितना प्रॉपर, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता होगा. दो पिलर्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, कौन सी इमेज सेंटर में आनी चाहिए, फिर जो राइट हैंड साइड में जिस तरह से इमेजेस बनाई गई है लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसे ही होनी चाहिए. एवरीथिंग सो मच माइन्यूटली इट इज़ डन. Getting it? We didn't had any kind of such instruments or anything to measure or something. It is just art. ये जो creative piece of work है, मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा कोई मशीन नहीं था जैसे ये बने हुए. They all are done handmade. So we have to be very proud about this type of style. Okay, so Dravida style of South Indian are two principal style of Indian temple. So we have two different type of art forms in the temple architecture. One is the north में, okay, नॉर्थ में वी हैव नागरा स्टाइल एंड द्रविड़ा विच इज़ साउथ में है, तो ये द्रविड़ा स्टाइल है. ओके, विच इज़
तो आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों में. द्रविड़ा स्टाइल इज़ क्वाइट काइंड ऑफ लाइक इट्स अ वास्ट फ्रॉम द बेस, इवन इट इज़ नॉट एपेक्स, मतलब वो इससे कोई ट्राइंगुलर शेप नहीं बन रहा है, ठीक है, वो इट इज़ लाइक अ ट्रेपेजियम शेप बन रहा है द्रविड़ा स्टाइल जो है. सो अ ब्लेंड ऑफ दीज टू स्टाइल्स नोन एज वेसारा स्टाइल, दोनों को मिलाकर नागरा एंड द्राविड़ा टुगेदर इज कॉल्ड वेसारा स्टाइल. द भूमिजा स्टाइल इज सीन इन द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, हैज़ अ क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ द नागरा स्टाइल. महाराष्ट्र में भी आपको जितने टेम्पल्स दिखाई देंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नागरा स्टाइल. देन स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स आर अरेंज, जैसे कि द्राविड़ा में कैसे टावर है 1 2 3 लेयर्स है, वैसे भूमिजा में भी लेयर्स है, विच बिकम स्मॉलर टूवर्ड्स द टॉप. Hence, the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. Now, you will study this Hemadpanti. ये भी एक पैराग्राफ important है. There is a question on Hemadpanti. So, you will read this Hemadpanti style of painting also. Page number 27. Okay. So, Hemadpanti style of painting is temples in the Maharashtra built in 12th to 13th centuries is known as Hemadpanti style of temples. Now, what is special about Hemadpanti? So, the outer walls of Hemadpanti temples are built in a star shape. Okay, they are built in a star shape. In the star shape plan, the outer walls of the temple has a zigzag design. This results into an interesting effect of alternating light and shadow. तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर्स ऑफ द टेम्पल में लाइट एंड शेडो स्प्रेड होते हैं, इस हिसाब से इसको टेम्पल को क्रिएट करने में आया है. यू कैन जस्ट गूगल इट दिस आई मीन आप इसी पिक्चर को बड़ा बारीकाई से बड़े से देख सकते हो. सिन्नार को विच इज़ अ फॉर्म ऑफ हेमाडपंती स्टाइल का ही एक टेम्पल है, फिर भी इन वेरी क्लियर इमेज यू कैन सी इट, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. ओके, दिस इज ओके. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमाडपंती स्टाइल इज़ अ मैसनरी. मैसनरी मतलब कि जो कड़िया काम कहते हैं ना जिसको, ये इसका एक बहुत बड़ा इसका एक एडवांटेज है. द वॉल्स आर बिल्ट विदाउट यूजिंग एनी मोर्टार, मतलब कि हाँ इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसमें एक भी मोर्टार यानी कि एक ब्रिक भी लगाया नहीं होता है. दिस ऑल मेड अप फ्रॉम द वन जॉइंट से बना है. देर इज़ नो जॉइंट, अंडरस्टैंडिंग, देर इज़ नो मोर्टार, मतलब ऐसे दो ब्रिक्स को ऐसे करके नहीं बनाया गया है. by locking the stones by using the technique of tenon and mortise joints. So उनको इसमें इस्तेमाल किया गया है tenon, मतलब वो पूरा एक सीमेंट से बनाया गया. there is no concrete bricks. समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ किससे बनाया गया है? जैसे हम नॉर्मली कोई घर या कोई होता है तो आपको पहले ब्रिक्स के लेयर्स बनाने होते हैं, उसके ऊपर सीमेंट की कोटिंग करते हो, वैसे बनाया जाता है, राइट. बट दिस काइंड ऑफ पेंटिंग हेमाडपंती में जो टेम्पल्स है, दे आर नॉट डन यूजिंग द मोर्टार यानी यूजिंग द bricks. they are done by clays and other cement concrete work. The Amreshwar temple, ये paragraph very very important, students learn by heart right now. Amreshwar temple which is in Ambernath near Mumbai है. Gondeshwar temple which is in Sinnar near Nashik है. Ondha Nagnath temple which is in Hingoli district are the few example of Hemadpanti style. Quickly learn these three name of the temples. Amarnath which is in Amreshwar, it is in Ambernath in Mumbai. Gondeshwar, it is in Sinnar near Nashik. Ondha Nagnath which is in Hingoli district. ओके, ये तीनों टेम्पल्स आपको बाय हार्ट करने हैं, विच आर द फॉर्म ऑफ हेमाडपंती स्टाइल. एंड देयर प्लान इज स्टार शेप, जो हमने स्टार्टिंग में बोला इनका स्टार शेप में होता है, जैसे स्टार में किस तरह से यू हैव 5 कॉर्नर्स लाइक दैट. द हेमाडपंती स्टाइल आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र. In medieval period, under the patronage of a Muslim sultanates, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating the Islamic architecture of India. So in India we have all different style का all mixture है, जैसे कि थोड़ा पर्शियन से लिया, थोड़ा सेंट्रल एशियन से लिया, थोड़ा अरेबिक से लिया, ओके, थोड़ा इस्लामिक से लिया, ये सबको ब्लेंड करके टुगेदर एक इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनाया गया है. Many beautiful buildings were created, जैसे कि कुतुब मीनार विच इज़ एट मेहरौली इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, गोल गुम्बज, ये सारी हमारी हेरिटेज प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स, you have to remember them. Then बीजापुर में है in Karnataka are all the world famous Islamic characteristics, but they are just not Islamic. It's a blend of Indian, Asian, then Islamic, Persian, सबका mixture है ये. The construction of buildings of Qutub Minar, very important. Qutub Minar which is in Delhi, started during the reign of Qutbuddin Aibak. इतना पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, बट इट वॉट कम्प्लीटेड इन द अल्तमश के पीरियड, यानी कि उसको पूरा 100 साल लगा. यानी यू हैव अ पिक्चर ऑल्सो कुतुब मीनार. ये मीनार देखो, मीनार मतलब क्या, ये इस काइंड ऑफ लाइक दिस व्हाट यू से काइंड ऑफ पिलर जैसे दिखता है ना ये.
सो कुतुब मीनार की जो हाइट है, मिनरेट्स की कितना हाइट है, इट्स 73 मीटर, दैट इज़ 240 फीट, इतना बड़ा है. ओके, इन द हाइट. द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज. Next you have Taj Mahal. We all are aware about the creation of Taj Mahal. It was created by Shah Jahan in the memories of his wife Mumtaz. Okay, it is a paramount example, means such a beautiful thing. इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है तो दैट इज़ ताज महल, क्रिएटेड बाय शाहजहाँ. एंड आफ्टर दैट जितने भी वर्कर्स थे उन सबके हाथ काट करने में आए थे, बिकॉज शाहजहाँ डिड नॉट वॉन्ट अनदर ताज महल टू बी क्रिएटेड. दैट्स वाई ही कट डाउन ऑल द वर्कर्स, जितने भी लेबरर्स वहाँ पे काम करते थे उनके सबके हाथ काट दिए गए थे. So it's an excellent example of the art form. So of the beauty of Islamic architecture in India, this world famous building has been declared as World Heritage by UNESCO. Okay. Okay, the next one is Gol Gumbaj, which is at Bijapur in Karnataka. Was built in the 17th century CE. This grand buildings houses is the burial of the Muhammad Adil Shah. Burial मतलब it is like a समाधि है जहाँ पे इनको दफनाया गया. Okay, मोहम्मद अली शाह बीजापुर के जो किंग रह चुके हैं. तो इनसाइड द डोम मीन्स ये जो आप देख सकते हो दैट हाफ सर्कुलर पोर्शन, कैन यू सी दिस हाफ सर्कुलर. नॉर्मली इस्लामिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैव दिस हाफ सर्कुलर डोम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स. ओके, स्कल्पचर्स में ये खास होती है, इस्लामिक की एक निशानी है ये. सो देयर इज़ अ राउंड गैलरी. Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere. मतलब एक छोटा सा आप थोड़े आँख की भी आवाज़ करोगे ना, it can be heard everywhere, like echo होगा. It is a echo proof sound. And if somebody claps, then from here it echo can be heard many of times. इसके लिए गोल गुम्बज. Now next one is during the British period, a new architectural style arose in India. It is known as Indo-Gothic architecture style because it's a blend of Indian as well as British, Indo-European kind of. Okay, Indo-European. Buildings like churches, government offices, residence of the top officials. Especially if you see the VT station के वहाँ पे आप देखो यार, there is a picture also given VT station. This is Indo-Gothic style. It's a blend of Indian as well as European style of paintings. Paintings नहीं, architecture. Okay, and you will find this even many government offices in VT station के वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत पुरानी buildings है जो इसी स्टाइल में बनी हुई है, Indo-Gothic style. Then buildings of the even Kolaba side, when you will visit now, you will find there some theaters and all these places. Okay, so Chhatrapati Shivaji Terminus, which is an also Indo-Gothic architecture and it is World Heritage Site. Then you have 4.3. This is so we are done with the visual art, and visual art we have briefly talked about the paintings and sculptures. Okay, paintings का folk art form and the classical art form. Same with the sculptures, we have studied some part of architecture as well. Now we are doing the performing art. Performing is the second. जैसे हमने कहा था, there are two types of visual arts. One is visual art, Drik Kala, and the one is performing art. That is you have Drik. Okay, so this is performing art form. India has, and here it will include your dance forms, theatre, drama. India has independent and the varied traditions of the folk songs, folk instrumental music, folk dances and the folk theatre. Okay, drama that is, which are the characteristic of every particular region. There exist many rich traditions of performing folk art in Maharashtra also. They developed as an integral part of the religious festivals and social life. नॉर्मली ये परफॉर्मिंग आर्ट हमारे कल्चर से डेवलप हुई है. जैसे कोली डांस है तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. पीपल स्टार्टेड इन द कोली एरिया, लोग ने स्टार्ट किया तो इसको कोली डांस कहा जाता है. तेरप्पा डांस, दशावतार इन कोंकणा, पोवाड़ा, कीर्तन, जागर गोंधल, ये सारे हमारे एक कल्चर था, हमारे एक रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम हम ये परफॉर्म करते थे. देन इट बिकम अ ट्रेडिशन, देन इट बिकम अ आर्ट फॉर्म, ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट. Okay, India has a rich heritage of a classical performing arts too. The text of Natya Shastra, you need to remember this name. Natya Shastra जो एक book है which is written by Bharat Muni, is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. Okay, Natya means drama and Shastra means book, a book written on theatre. Okay, which includes about music as well as theatre. 9 moods, यानी कि 9 components of the theatre. The 9 components are which one you are given here below. The Shringar, that is love. Hasya, that is humor. Bibhatsa, that is repulsion. Rudra, that is terrible. Karuna, that is sad. Veer, that is heroic. Bhayanak, fearful. Abdut means wonderful, wondrous. या शांत, पीसफुल. ये सारे राग हम अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं. यू कैन एक्सप्रेस इट थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन. जस्ट आपका एक
फेस, ये सारे जस्ट आईज एक्सप्रेशन एंड लिप्स के एक्सप्रेशन से यू कैन शो ऑल दिस 9 मूड ऑन योर फेस. ओके और इसके एकदम एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो यू शुड विजिट केरला. केरला का जो डांस फॉर्म है वहाँ पे जो आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम इट कॉल, बट दिस पीपल ओके वो लोग कोई एकदम अच्छे से मेकअप करते, पूरा फेशियल मेकअप करते, बहुत बड़ा मेकअप करते. इवन दे वेयर सम हेड गेयर ऑल्सो एंड दे शो ऑल दिस रागाज ऑन देयर फेसेस एंड वेरी क्लियरली इट इज़ शोड. अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो इवन आई कुड हैव ट्राइड नो showing you some ragas. Indian people came into contact with the cultural tradition of other nations, and that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. As a result, many styles of presenting a classical vocal music, instrumental music and dance came into existence. So we have different dance forms. Music भी अलग अलग है, जैसे classical vocal music जो हमारा Indian music जैसे कहेंगे, then instrumental music based जो instrumental के ऊपर है, and dance forms, ये सब existence धीरे धीरे evolve होते गए, change होते गए dance form. As well as there is a mixture of blending of Indian as well as European, Western. There are two main branches of the Indian classical music, okay, and that is Hindustani music and Carnatic music. उसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले आपको ये जो पैराग्राफ है, इट्स अबाउट बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह के बारे में है. अ बुक विच इज़ रिटन एंड टाइटल्ड एज किताब नवरस. नवरस मीन्स 9 मूड, दैट 9 जो पद बताए ना वो. यू कैन रीड दिस just for a general knowledge, whereas it is not important to remember anything, just to read it. So we were talking about two types of music, one is Hindustani and one is Carnatic music. There are two forms of classical Shastriya. तो classical music यानी कि शास्त्रीय music and semi classical means उप शास्त्रीय. Not it is a semi, मतलब it's a blend of modern as well as classical. The semi-classical has included many styles of folk music. A beautiful blend of all the three forms of music, vocal, instrumental and dance, can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak of North India, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu and Kathakali and Mohinittam in Kerala. Kerala का जो डांस फॉर्म जो मैं बात करी थी ना, जहाँ पे नो 9 या ये वो पिक्चर ऑल्सो, दिस इज़ कथकली केरला. इस तरह से दे एक्सप्रेस इट. ये जो है दिस या हेडगेयर पहन कर इतना फेशियल डेकोरेशन करते बॉडी को, एंड एकदम उनके दे डोंट डिलीवर अ सिंगल डायलॉग, just by the facial expression they say entire thing and you understand also. The best part that you understand it without a single utter word. So that is the best part about our this kind of style of art form, right? So and you will remember these all the very important like Kathak जो डांस है that is of North India, Lavani is of Maharashtra, ओडिसी का है उड़ीसा है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम ऑफ केरला. Okay. In India, in the post-independence, you have a picture of Lavani dance form as well. In India, the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to the common people. Many people attend these festivals, including Indians and foreigners alike. Means specially there is a dance form, जैसे हमने कहा कि जो कथकली डांस है, स्पेशली उसका एक प्रोग्राम परफॉर्मेंस किया जाता है. जो भी टूरिस्ट होते हैं, जो भी फॉरेनर्स होते हैं, दे डेफिनेटली विजिट एंड दे वॉच दिस डांस फॉर्म्स. उनके एक अलग से उनका स्टेज शो किया जाता है. ओके, जस्ट टू इनकरेज दिस आर्टिस्ट as well as this is our one of the heritage. So we are just keeping this heritage alive. And then we have many people attend these festivals, including Indians and foreigners. The Savai Gandharva festival of Pune is a famous one because in this festival you are showing, I mean the Indians are showing all different जो Indian artist है, performance artist है, उनको बुलाया जाता है, उनका stage show किया जाता है. And this festival, I mean this जो ये program होता है, it has been attended by many tourists. Lately, we can see an inclination towards experimenting and creating fusion of various music style. Fusion means mixture. अभी जो हम rock type of music हम सुनते हैं, different ना देसी music, इनका mixture है. This one, then different art जो musical forms है. I'm not a music lover, so I'm not having the exact idea about it. By trying to overcome the limitations imposed by a traditional style or a school, Pandit Uday Shankar, who is a prominent name among such artists, who created a new style, okay, because it was totally new and very much unique. He successfully created a fusion. Fusion means again a mixture, blend of Indian classical dance and the European opera music. तो हम सब काफ़ी we all are aware about it and हमने देखा भी opera music किस तरह से perform किया जाता है, right? A single lady, पता नहीं वो क्या बोलती है, क्या letters, क्या words होते हैं, just keep screaming. इतना scream हो सकता है कि even the glass which you are maybe holding it in your hand may break down because of that loud screaming of the lady.
and it is normally performed by the women. Okay, so next is he also included various forms of folk dances in his style. Thus, the scope of the presentation of Indian performing arts seem to be constantly expanding. तो ये जो आर्ट फॉर्म है, हमने जितने भी आर्ट फॉर्म, म्यूजिक देखा, डांस देखा, पेंटिंग देखा, स्कल्पचर्स देखा, दिस इज स्टिल एक्सपांडिंग. इट इज़ नॉट लाइक ये ओवर है, इतना ही होगा, ऐसा नहीं है. रोज़ नया नया नयापन आता है डांस फॉर्म में, म्यूज़िक में, सब में नया एडिशन हो रहा है. The same phenomena is apparent in the field of Indian visual art. Visual art means paintings and even sculptures. There is a new addition is every day is added. So now the next topic, which is the last topic of this chapter, is art, applied art and professional opportunities. Okay, applied art is not that which one we have studied. That was applied history. This is applied art. Okay, and you have a question also on applied art. Anyways, first we'll talk about the art. Art history is an independent branch of knowledge. Various opportunities of research are available in this field. Art historians can work in the field of journalism, means he can write it in the papers, newspapers, edit about the artistic column वो लिख सकते हैं. Art market is an independent field. Yeah, you can see many museums, स्पेशली जैसे कि हम कहते हैं दिल्ली में चांदनी चौक है, तो वहाँ पे ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो चीज़ होता है, आर्टिफैक्ट्स ऐसे बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोल्ड आउट इन द मार्केट. So it calls for the special expertise to assess the exact value of an art object or to ensure that it is genuine. बहुत बार होता है, लोग कहते हैं कि ये genuine art form है, कि 200 साल पुराना है, but it may not be that much 200 years पुराना. इट वुड बी लाइक अभी से बनाया गया होगा, जिसको बोल दिया होगा जस्ट टू सी. जितना वो चीज़ एंटिक होता है, एंटिक मतलब क्या, जितना वो पुराना होता है ना, उसकी दाम बढ़ जाती है, बट वो एक्चुअली में पुराना है कि नहीं है, ये जो मतलब 200-300 साल पुराना है कि नहीं, वो जानने के लिए दे नीड दे नीड अ हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन, हु कैन एग्जैक्टली टेल दिस पर्टिकुलर आर्ट पीस इज एक्चुअली जेन्यून वन और इट इज़ जस्ट अ फेक वन. So expert is required for this. Okay, an expert with a deep understanding of art history is required for this task. Next is heritage management and cultural tourism are also recently developing one. In these fields, students of art can find many professional opportunities. Museums, archives. It's like a library. It's like a library kind of a museum जहाँ पे all that government documents and all that important things are preserved. Library science and information technology, archaeological research, Indology are some important fields in this regard. So this was about art, ki what opportunities are available in the art as an art historian. Now next is applied art. The visual and performing art are primarily looked upon as a means of entertainment for people. So mostly people watch these dance forms, they watch theaters, they listen music just to get entertainment, एक fun purpose के लिए है. The artist performs primarily with this purpose. However, there is a scope to combine an artistic creation with the utility value. मतलब you can earn money. Earlier people used to perform dance or used to perform their stage shows करते थे just to entertain people or just for their own hobby. But now one can make their career. हम देख सकते हैं there are many artists who earns a lakhs of rupees by this visual or performing art and they make their as their career opportunity. और आप लोगों में से भी जो भी इंटरेस्टेड है कोई भी आर्ट फॉर्म में, I would really say that you should continue practicing your art form. Okay. However, there is a scope to combine this and economically viable. Viable means you can get money, you can become good stable lifestyle हो सकती है. ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करो, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ो ही. You can make your own identity in that particular art form. So industry and advertisement, interior designing, production of ornamental designing and jewelry designing करना, art designing और stage backdrops, stage जो नेपथ्य यानी कि जो stage show का ड्रामा आपने सबने थिएटर्स जो देखा होगा, तो थिएटर्स के अंदर जो स्टेज पीछे का जो स्टेज डेकोरेट करना होता है, बैक स्टेज का वर्क, वो फिर आर्ट डायरेक्शंस फॉर फिल्म्स, टेलीविजन, क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स मीन्स लाइक प्रिंट बुक्स के जो कवर पेजेस होते हैं, दैट मैगजीन्स के कवर पेजेस, कैलीग्राफी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, कस्टमाइज स्टेशनरी गिफ्ट्स, ये सारे फील्ड आज भी है और इन सब में स्कोप बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे सबके डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट है और डिज़ाइनर मतलब कि आर्टिस्ट ओनली. ओके, देन ऑब्जेक्ट्स आर फील्ड्स ऑफ अप्लाइड आर्ट्स. The field of architecture, photography are also part of applied arts. Nowadays, still and animated graphics created with the help of computers are used with the various, यानी कि graphic designer जो होते हैं ना, animated graphics are used nowadays. This is also applied art.
Ornaments, artistic creations of metals, earthen pots with the colorful designs, objects made from the cane यानी stick, bamboo, beautiful glass objects, attractive textile. Textile means designing on the clothes में भी अपने कपड़े में भी अलग अलग टाइप की क्लोथिंग डिज़ाइनिंग की गई होती है, राइट. पिक्चर्स ड्रॉ किए होते हैं, कस्टमाइज किए हो गए होते हैं. सो ऑल कैन बी लिस्टेड इन द अप्लाइड आर्ट. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स इन द अप्लाइड आर्ट नाउ. ओके. Now, what are opportunities? Every field mentioned above requires a detailed planning and meticulous management. Meticulous means careful. At every stage of production, it is essential to employ trained and skilled individuals at every stage. So ये जो field आपने ऊपर बताई दी है ना, ये सब में skilled required है. Artistic imagination, creation is required. Not like a normal person can become an artist. ऐसा नहीं हो सकता है. A proper training is required for that. Some of the production processes of the artistic objects have a history of a certain traditions. The development of each productive process has its own history. Hence, the syllabi means syllabus, portion of a training courses of art design include the history of various industrial and cultural traditions. So, there are many institutes, there are many universities who are providing these all trainings. If one is interested in making the career in any of the lines above given, field given, you can go under the training, you can learn about it, you can get a certification of the courses and then practice. There are a few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field. Occupational means once you finish your training, they give you a job, they give you a training job so that you will learn it practically. So among them National Institute of Design, ये very very important. ये जो institute है कहाँ पे, where it is situated at Ahmedabad in Gujarat, which is a world renowned institute. ये national, and people are dying to get the admission in this institute because very rare people, very excellent people only can get the admission here. They have to obviously go through the entrance exams and then only can secure their admission here. So institute has introduced an online courses since 2015. So in the next lesson we will learn about the mass media and history. So anyways, we are done with the art chapter. Then next chapter is about the mass media, will be continued in the next lecture. You have to start preparing the question answers, start writing the question answers. This chapter is quite big as I told you, and you will be studying the entire chapter. You will be reading the each and every line again about this chapter. It's quite easy chapter because इसमें बहुत सारे ऐसे आंसर्स होंगे जो आप अपने own words में भी लिख सकते हो, बोल सकते हो. तो आपको ये पूरा chapter prepare करना है, ठीक है? And I will be taking a test in the coming week or maybe the same week. All right, bye bye.